Which precautions are taken to protect crops from any harm? I'll repeat all the questions. After the colon mark, first point is, for which crops is this land suitable? Second is, which precautions are taken to protect crops from any harm? Third point is, what type of irrigation is used for growing crops? What type of irrigation is used for growing crops? Okay. Now we'll go to the next question. That is, prepare a questionnaire for a field visit to a factory. Write the next question. Prepare a questionnaire for a field visit to a factory. अभी हमने इतना डिस्कस किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि how we are going to prepare the questionnaire, right? जैसे हमें जहाँ पे भी जाना है उसका इंफॉर्मेशन फाइंड करना है तो हमें कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे, उससे हमें सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा. स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ द पर्सन, है ना. बेसिक डिटेल से आपको शुरू करना होगा. नेम ऑफ द पर्सन, फिर उसका डेजिग्नेशन, अगर फैक्ट्री के बारे में है तो बाकी के क्वेश्चन आप लिखते जाओगे. ओके. अगर फार्मर से करना है तो उनके क्रॉप्स के बारे में, सीजन ऑफ उनके ग्रोथ के बारे में और उसके कल्टिवेशन के बारे में, उनके इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में. तो ये क्वेश्चन हम लोग फैक्ट्री में नहीं पूछेंगे और फैक्ट्री के क्वेश्चन हम लोग फार्मर को नहीं पूछेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी आर गोइंग टू मेक द क्वेश्चन. बराबर. यहाँ पर आप सब क्लियर हो, यहाँ तक कि एवरीबडी इज क्लियर? या ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिपेयर अ क्वेश्चनर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री. ये लिख लिया आपने क्वेश्चन. चलो अभी इसका आंसर लिखते हैं. द क्वेश्चनर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री इज एज फॉलोज. The questionnaire for a field visit to a factory is as follows. The questionnaire for a field visit to a factory is as follows. Shall I tell you the first question? Yeah. What is the year of establishment of this factory? What is the year of establishment of this factory? Second question. Okay, I'll give you a moment to write. What is the year of establishment of this factory? Fine. Second point. Which goods are manufactured in this factory? Which goods are manufactured in this factory? Third point. How many workers are working in this factory? Excuse me, ma'am. How many workers are working in this factory? Fourth point. Which raw material I'll repeat. Third point, how many workers are working in this factory? Fourth point, which raw materials are essential for the goods manufactured in this factory. Goods manufactured in this factory. Which raw materials are essential for the goods manufactured in this factory? Fifth point, from where is the raw material required for manufacturing the goods purchased? From where is the raw material required for manufacturing the goods purchased? Sixth point, what are the goods, where are the goods manufactured supplied? Where are the goods manufactured
supplied. Where are the goods manufactured? Supplied. Seventh point, what precautionary measures are taken? What precautionary measures are taken to ensure the safety of workers? To ensure the safety of workers. Eighth point, which environment protecting measures, which environment protecting measures are taken by this factory? Are taken by this factory. I'll repeat the seventh and eighth. Seventh one was which precautionary measures are taken to ensure the safety of workers, and eighth one is which environmental protecting measures are taken by this factory? Question mark. कितना डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन? बहुत. Afan, you want me to repeat any point you ask me? I'll repeat. Else, there is a recording which I'll be sending across after the class. I understand that there is a connectivity problem. If you miss something, you can go through the video again. And if you just now want me to repeat some point, tell me, I'll repeat. I don't know where I'll repeat. No, ma'am, Yeah, I will which say. point? Ma'am, the third Yeah, point. or you can write it. Third point. Yes, ma'am. I did. How many workers are working in this factory? Okay, ma'am. Thank you. अच्छा, हमने क्या पूछा कि ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा क्या? किसी किसी को ये भी डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए हम पूछ रहे हैं. ठीक है. Tell me. नहीं. नो 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 नो. ओके. क्यों पूछ रहे हैं हम पता है? क्यों पूछ रहे हैं? ये आपको पता है इसका क्या वेटेज है? ये क्वेश्चन है ना, इसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? हमने ये वाले क्वेश्चन के मार्क्स नहीं बताए थे. हमने इसके पहले वाले जो थे ना 4 मार्क्स क्वेश्चन से बताए थे. इसका पता है This आपको will be a वेटेज 5 कितना then. है? Oh, sir. No, this is also 4 marks question. Right. Okay. Actually ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, बट इसमें 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स ईच. ठीक है. एंड देयर विल बी 4 क्वेश्चन. 50% चॉइस है आपको. 4 में से 2 लिखने हैं और ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स. तो कितना इजी है, आपको ये बस लिखना है ना? Now I guess you have understood all this. So shall we take a quick what you can say, a quick revision of the whole chapter? There is some new student waiting. Who is absent? कोई रुका है बाहर? Let me check. Just a moment. 1, 2. कितने हैं हम लोग? 16, 17. Who is this? Ma'am, I think so. That is my laptop account. Please take it in Okay. so I can log out it. बाप रे, कितनी पर तुम्हारे कितने अकाउंट है? साथ ये आदि दूसरा ही है. दूसरा ही है. इससे पहले भी एक था ना? हाँ. 1 मिनट. हाँ, वो लॉग आउट Okay. करना है मैम, इसलिए. ओके, आप लॉग आउट कर दो. वो मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, फिर अपना टाइम जाता है ना. हाँ हाँ. ओके. मैम हो गया.
Okay. Now what we'll do is, thank you beta. Now what we'll do is, Welcome. we'll do a quick revision. हाँ, बिल्कुल time waste करना नहीं.